मनी प्लांट प्राय अधिकांश घर में देखल जाइत अछि। ओ जनकपुर में जाए तैयो वीरगंज में जाए, विराटनगर जाए, काठमांडू जाए, इंडिया जाए, प्राय घर में मनी प्लांट देखल जाइत अछि। कहै छै जे मनी प्लांट जे घर में रहैत अछि ओहि घर में सुख के अनुभूति होइत अछि आ ओकरा घर में पैसा के अभाव नहीं रहैत अछि। तहू कारण से सब लोग मनी प्लांट के गाछ लगबैत अछि। जतऽ धरि मनी प्लांटक विशेषताक बात अछि, मनी प्लांटक पात सब गोल आ चिकनी होइत अछि जे सिक्काक जकाँ देखाइत अछि। एहि कारण एकरा मनी प्लांट सेहो कहल जाइत अछि। एना मानल जाइत अछि एकर गाछ जतेक बढ़ैत अछि घरक सदस्यक तरक्की वा उन्नति ओहि रूपसँ बढ़ैत अछि। फेंग शुई के अनुसार मनी प्लांट घरक ऊर्जा के सकारात्मक बनबैत अछि आ हवा के शुद्ध करैत अछि। मनी प्लांटक के दोस्ती वा मित्रताक गाछ सेहो कहल जाइत अछि जे आसानीसँ कतहु आगाँ बढ़ि सकैत अछि। ई खास कऽ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि आ रेडिएशनक प्रभावके कम करैत अछि। आ एकर हरियाली आ आकर्षण पात सब घर के सुंदरता बढ़बैत अछि। मनी प्लांट मात्र घरक शोभा नहि अपितु एकरा सुख समृद्धि आ मित्रताक प्रतीक सेहो मानल जाइत अछि। आ तेँ लोक जे छै से अपना घर के आगाँ या ई कही भीतरो में ई गाछ लगबै छथि। मनी प्लांटक विषय में एकटा ताइवान से जुड़ल एकटा कथा अछि। ओहिमे कहल जाइ छै जे ताइवानक एकटा किसान एकटा गाछ ओकरा कोनो जंगल में भेटलै। ओ गाछ के ओ अपना घर में आनि कऽ लगा लेलक। जखन घर में ओ गाछ लगलै तकर बाद ओ गाछ के प्रभाव कहिए या ओकर मेहनत के प्रभाव कहिए ओकरा घर में समृद्धि आबऽ लगलै। ओ जे किसान जे छलै जे उत्पादन करै छलै, जे खेत में जे उत्पादन करै छै तकरा व्यावसायिक रूप में आगाँ बढ़ेलकै आ उ बहुत किछुए दिन में धनिक भऽ गेल। ई जखन बाहर हल्ला भेलै, बाहर लोग के जानकारी भेलै तखन अहाँके सब ई गाछ लगाबऽ लागल आ बहुत के एकर फायदा सेहो भेलै।